खुशी चार्जर देना भाई। हेलो। मैं आज आपको एक ऐसी महान वीरांगना की वीर गाथा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी वीरता और अपने शौर्य के बल पर अपना नाम भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर अंकित किया है। और उस महान वीरांगना का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई भारत के इतिहास में सबसे वीर और प्रेरणादायी महिलाओं में से एक थी। उनका नाम साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत वीरता दिखाई और अपने झांसी के लिए अंतिम सांस तक ले आई थी। इसीलिए उन्हें भारत की महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका का था, लेकिन उन्हें ताजुब वक्त मल्लू कहते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी भाई था। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव नृत्य के यहाँ काम करते थे। मनु जब केवल 8 वर्ष की थी, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। माँ के चले जाने के बाद उनका पालन पोषण उनके पिता मोरोपंत ने किया। बचपन से ही मनु बहुत ही साहसी और निडर थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखना बेहद पसंद था। किंतु उस समय लड़कियों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्होंने यह सब सीखकर सबको चौंका दिया। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली के नाम से भी जाना जाता था। अन्य लड़कियों से अलग घर पर ही उन्होंने घुड़सवारी और शस्त्र कला की शिक्षा प्राप्त करी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। तब वह केवल 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वह झांसी की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ ही समय में चल बसा। इसके बाद रानी और राजा ने एक 5 वर्षीय पुत्र को गोद दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उसी समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने डॉक्टर ऑफ लैब्स की नीति बनाई, जिसके अनुसार यदि किसी राजा का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो अंग्रेज उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लेते थे। अंग्रेजों ने इसी नीति के तहत झांसी पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तब अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि वह झांसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा, झांसी मेरे बेटे दामोदर राव की है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति का कड़ा विरोध किया। सन 1857 में भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इस विद्रोह में रानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो किले की रक्षा के लिए रानी ने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से युद्ध किया। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब किले को बचाना मुश्किल हो गया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और किले से बाहर निकलकर अपनी सेना के साथ फिर से युद्ध जारी किया। रानी लक्ष्मीबाई का साहस और कौशल देखकर दुश्मन भी हैरान हो गए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर में युद्ध किया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे गंभीर रूप से घायल हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश और अपनी झांसी के लिए संघर्ष करते हुए व्यतीत कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस और बलिदान का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने केवल झांसी के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी प्रेरणा ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उनके अधिकारों और अपने देश के प्रति कर्तव्य के लिए प्रेरित करा। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता और साहस के लिए आज भी याद किया जाता है। वे एक
रानी ही नहीं अपितु स्वतंत्रता संग्राम की एक महान सेनानी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के विरुद्ध साहस से खड़ा रहना चाहिए और यदि अपने देश के प्रति बलिदान देने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी बच्चे बच्चे पुरानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानी सुनाई जाती है। एक सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान उनके बारे में लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने हमें संदेश दिया कि यदि हमें साहस और देशभक्ति है तो हम बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का साहस और देशभक्ति आज भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें भारत की महान वीरांगना भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी अदम्य वीरता, देशभक्ति और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में आज भी याद किया जाता है और बड़े सम्मान से सब याद करते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं भी युद्ध कौशल, नेतृत्व और राज्य संचालन में पुरुषों से कम नहीं है। बचपन में ही शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करने वाली वह पहली महिला थी जो स्वयं युद्ध भूमि में उतरी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य ने काफी महिलाओं को प्रेरित करा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश और अपने झांसी के लिए बलिदान कर दिया। चमक उठनी सन 57 की वो तलवार पुरानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी महान वीरांगना की देशभक्ति, वीरता और साहस को मेरा शत शत नमन। That was a beautiful presentation. Sometimes the most beautiful moments in art are the ones that are not planned. Literature also began like this. Someone had an idea, a feeling, and it turned into a story, poem, or a performance. Now, I welcome team number 4 to the stage to present their PPT presentation. Jai Shri Krishna. We, the students of PCA from Indira Gandhi Mahila Mahavidyalaya, Kaithal, are here to present our divine cures through Vrindavan, the land of eternal love. You know, Nidhi, I have heard so much about this place. People travel from all over the world just to be here. But when I entered the street, it was so crowded and loud. Where is the peace everyone talk about? That is the beauty, Priyanshi. In Vrindavan, the cure is also the form of prayer. You don't find the peace in silence, you look for it in Radha-nam. And just breathe in and feel the energy. It really feels like time has stopped here. This doesn't look like a modern city at all. That's because it's very old. For a long time, this was just a thick forest. Then in the 16th century, saints came and rediscovered the sacred spots of Lord Krishna. Slowly, it turned into a city of 5,000 temples. And now, every stone and every tree has a story from thousands of years ago. 5,000 temples? That's crazy. No wonder everything is so spiritual. It indeed is. I visited the Bhagya Bihari temple this morning and I could not stop looking at the idols. The dresses were so divine, shiny and beautiful. Is that a local personality? Yes, that is our famous poshak. It's not just a dress, it's an art. Local artists use silk, gold and silver threads to make them with their own hands.
And look at the Sanji art on this slide. This is a very rare art with they used to decorate it with the floors, and now it takes a lot of time and patience, and even a single mistake can ruin the whole piece. It's amazing how they have kept these traditions alive so many years. That's the beauty of Vrindavan, Priyanshi. Riddhi, I also heard something about a place called Nidhivan. Someone said the trees, they are actually people. Yes, that is the most famous legend here. It is said that at the night, the trees in Nidhivan turns into gopis and it performs a dance with Lord Krishna. This dance is called the Ras Leela, and because of this dance, no one is allowed to enter the forest after the sun goes down. Not even the birds enter the forest. And even the science cannot explain the fact that why this is happening, but everyone believes it with their whole heart. This is crazy. It's like a living fairy tale. That's true. Okay, after all the moving and storytelling, I'm very hungry. What should I eat first? You cannot leave without trying the Mathura peda. It is made from the milk and it has a very unique taste. And you must try the lassi in a clay cup. And since Krishna loved makhan and milk, the whole city is famous for its dairy products. Everything you eat here it feels like a prasad, pure and delicious. I think I'm going to forget my diet today. The food sounds as sweet as the city. Vrindavan teaches you that the life is simple. You don't need much to be happy. Here we don't say hello or hi, we just say Radhe Radhe, and it solves our every problem and connects with everyone. I guess you are right. I can feel it now. The crowd doesn't bother me anymore. It feels like everyone is a part of one big family. So Priyanshi, are you ready to become the part of this divine chaos? Definitely. Then let's say it together for the last time. Radhe Radhe. Sometimes the most interesting part of literature is not what is clearly explained, but what remains unknown. Across many stories and plays, writers have explored rituals, hidden powers, and beliefs that people have tried to understand for centuries. From strange prophecies in Macbeth to the supernatural elements we see in different traditions, mystery has always been a part of storytelling. So now, I invite team number 5 to the stage to present their PPT presentation. Give them a big round of applause, please. नमस्कार बाबा। नमस्कार बॉस। मैं एक रिसर्चर हूँ। मेरा काम है रिसर्च करना, क्वेश्चंस पूछना, प्रूफ और लॉजिक जानना। लेकिन आज मैं खुद एक उलझन में हूँ। लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या एक रहस्यमय विद्या है। कोई कहता है कि ये काला जादू है, तो कोई कहता है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मुझे बताइए बाबा कि ये क्या है? वत्स, तुमने काफी सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, उलझन। देखो, तंत्र विद्या कोई अंधविश्वास या काला जादू नहीं है। यह तो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रणाली है। यह हमें मोक्ष प्राप्ति और आत्म ज्ञान की शिक्षा देती है। अच्छा बाबा,
तो ये एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल सिस्टम भी है। हाँ वत्स। तो बाबा मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वत्स, इसकी शुरुआत वैदिक परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। इसकी शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई। इसके मूल स्थान कश्मीर, बंगाल और तिब्बत माने जाते हैं। तो बाबा जैसे हर सब्जेक्ट का एक लिटरेचर होता है, उसकी बुक्स होती हैं और उसका पूरा एक सिस्टम होता है, तो क्या तंत्र विद्या के साथ भी ऐसा ही है? हाँ वत्स, तंत्र विद्या का जिक्र विभिन्न पुस्तकों में किया गया है। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, महानिर्वाण ग्रंथ। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो वज्रयामसार, वज्रसूत्र, मंडला कला। इसके अलावा जैन धर्म में प्रत्योपन सूत्र, उत्तराधरण सूत्र और महायान सूत्र आदि पुस्तकों में इसका जिक्र किया गया है। सच कहूँ तो बाबा मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मुझे ही इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, तो आप लोगों को तो क्या ही होगा। लेकिन बाबा इसके बावजूद ये विद्या बदनाम क्यों है? वत्स, जब लोहे को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार जब एक विद्या काफी प्राचीन हो जाती है तो समय के साथ उसके अंदर कुछ कुरीतियां समाहित हो जाती हैं, अन्यथा एवं किसी को नुकसान न पहुंचाना था। बाबा आप कहते हैं कि तंत्र विद्या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो फिर प्रतिदिन हम अखबारों में तंत्र विद्या को काला जादू, हत्या, बलि। मैं एक बार आज यहाँ मौजूद आप सबको बताना चाहूंगा कि तंत्र विद्या का संबंध काले जादू या बलि के नाम पर मनुष्य की हत्या से ना कभी था, न है, न होगा। इसके विपरीत तंत्र विद्या तो आत्मज्ञान और मोक्ष की विद्या है। बाबा जी आपने तो मेरी तंत्र विद्या के हर उलझने सुलझा दी। उम्मीद है आप सबकी भी तंत्र विद्या से संबंधित सारी उलझने सुलझ चुकी होंगी। धन्यवाद। Every performance carries a different story, a different imagination. And that is what makes literature and art so fascinating. Everyone interprets it in their own way. So let's welcome team number 4 to the stage to showcase their presentation. Give it a big round of applause, please. Culture is not only preserved in books and monuments. Sometimes it is preserved in the gentle Fulkari. Good afternoon, respected judges, teachers, and everyone present here. I am Tamanna, and I proudly represent Indira Gandhi Mahila Mahavidyalaya Catholic. Today, I am here to present my presentation on Fulkari, the floral heritage of Punjab. Now, let me take you to the streets of Punjab, which is full of colors, traditions and music. Among these traditions, there is a beautiful art in which women create various designs by using needle and thread. And this traditional embroidery is known as Fulkari. This Fulkari is also literally means that there is a flower work in this. That's why its name is named Fulkari. Now, I'll tell you about what Fulkari is. Fulkari is the traditional embroidery art from Punjab, and it is majorly done on this tradition has been practiced in Punjab for centuries. Now, let me tell you about how these women learn this technique, how the history of Fulkari begins to bloom. Now, this history of Fulkari has been passed from generations to generations, where women learn this skill from their mothers and from their grandmothers.
They used to sit together, talk, sing folk songs, and then they created these beautiful designs for the prestigious occasions of their life. Now let me tell you about a special and famous style of fulkari, which is bagh. That bagh literally means a garden. In this style, fulkari is properly filled with the dense embroidery to make it look like a garden. That's why this is known as bagh. Now, I am here to tell you about the importance of fulkari in the modern times. If we look here and there, in earlier times, fulkari was only related to dupattas and shawl, but in present time, fulkari is also used in bags, dresses, jackets, and even in home decor. So this is the importance of fulkari in the present time. Now I just want you all to take a look on this fulkari design and tell me, is it okay if we diminish this theory of ourselves, if we let go this tradition of Punjab? With this rapid modernization, this theory has left somewhere. So please have a look and please save this tradition of ourselves. Thank you. That was an amazing performance. If we think about India, the first word that often comes to our mind is diversity. Traveling from north to south, and you will notice so many differences in language, food, traditions, even the way festivals are celebrated. But the beautiful part is that these differences don't divide us. They come together and create something richer. And perhaps that is the true meaning of amalgam, a mixture, an inclusion, where different cultures and traditions blend and coexist. And with that, I invite team number 5 to the stage to showcase their presentation. Give up a big round of applause, please. ओए अन्ना, यार जरा मेरा फोन देखना। अन्ना साला, माय बिट। सुनो विक्की बेटा ना, अगर तुमने एक बार और वो फिर तमिल एसेंट मारा तो मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन स्पैम फोल्डर में डाल दूंगी। और वो एनआरएस का नहीं होता, इस इन्ना का पूरा रिसर्च करो। अरे चिल यार, तुम लोग इतनी छोटी बात पर इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? थोड़ा जलेबी खाओ, थोड़ा लुंगी डांस करो। पर ये लोग तो ना जलेबी को भी मुरुक्कू बोलते हैं। सुनो विक्की बेटा ना, हम लोग सीरियस इसलिए है ना क्योंकि इंडिया का 30% जीडीपी और हाफ आईटी सेक्टर हम लोग ही संभाल रहे हैं। जब तक तुम ओए होए करते करते थक जाती हो, तब तक हम बेंगलुरु में 2 नए स्टार्टअप लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बता, तुम लोग इतनी सुबह इतनी सैड लुकिंग चीज इडली कैसे खा लेते हो? अयो विक्की, इडली को तुम सैड बोल रहे? इडली इतनी आइटम है ना कि जिम ट्रेनर भी रिस्पेक्ट से खाता है। तुम्हारा पराठा देखकर तो डॉक्टर भी बोलता है इसको आधा खाओ, नहीं तो पेशेंट भी आधा हो जाएगा। अरे यार, और ये कड़ी पत्ता, इसका क्या? बटर चिकन ना एक ही फ्लेवर का होता है, क्रीम क्रीम क्रीम। साउथ में देखो वैरायटी, केरला का आपका मशरूम, हैदराबाद की असली बिरयानी, कर्नाटक का बिस्से बेलेबाग। हम लोगों ने फ्लेवर्स में फुल पीएचडी की है। अच्छा, चलो खाना पीना तो चलता रहता है। इनकी मूवीज देखी है आपने? इनकी मूवीज में हीरो एंट्री लेता है, 50 गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। फिजिक्स की तो इन लोगों ने मम्मी कसम खाई है। फिजिक्स
वाली थी ना तो पूरा थिएटर हिल गया था। ट्रेंड हम लोग सेट करते हैं। अच्छा, और ये रजनीकांत सर का क्या लॉजिक है, बुलेट को एक हाथ से पकड़ना? देखो विकीना, लॉजिक वहां भी छुट्टी में गई थी। बॉलीवुड का रेस 3 देखा है ना, वहां भी लॉजिक छुट्टी पे चली गई थी। और अगर मूवीज देखना है ना तो तमिल या मलयालम मूवीज देखना विद सबटाइटल्स के साथ, दिमाग का ढक्कन ओपन हो जाएगा। हाँ हाँ, जब अगली बार मैं चेन्नई एक्सप्रेस देखूंगा ना तो तुम्हारी सारी बातें याद रखूंगा मैं। चेन्नई एक्सप्रेस? सीरियसली विक्की, अगली बार जब भी तुम मूवीज देखना तो तमिल या मलयालम मूवीज देखना विद सबटाइटल्स के साथ। यार वैसे मुझे ना वो तुम्हारी फिल्टर कॉफी पीनी है, पर ये लोग तो फिल्टर कॉफी भी डब्बाना में पीते हैं। मुझे तो लगता है मुझसे तो गिर जाएगी वो। देखो विक्की, साउथ इंडियन से फ्रेंडशिप की है ना तो फिजिक्स कैसे सीखना है और फिल्टर दोबारा कॉफी कैसे पीना है वो भी सीख जाओगे। हाँ हाँ, पर वैसे मेरी मम्मी है, ये लोग इतने संस्कारी होते हैं। कितना गोल्ड पहनते हो तुम लोग। गोल्ड सिर्फ शौक नहीं है विक्की, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। हमारे ज्वेलरीज के डिजाइन टेम्पल गोपुरम से इंस्पायर्ड है। टेम्पल गोपुरम का नाम सुना है कभी? टेम्पल गोपुरम 1000 साल पहले बना, बिना क्रेन बिना मशीन के। हिस्ट्री सिर्फ बुक में नहीं, रियल लाइफ में है। ओके, मुझे तो इनकी भाषा भी समझ नहीं आती, इल्ले पुल्ले यही चलता रहता है इनका तो। देखो विक्की ना, हिंदी हमको समझ आता है, बोल भी लेता है थोड़ा थोड़ा, पर तमिल का अपना म्यूजिक है, दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है। अगली बार जब भी तुम साउथ में आओगे तो अयो मत बोलना, वणक्कम बोल लेना, दिल जीत लोगे हमारा। ठीक है, पर वैसे ना तू मुझे वो सिखा दे, अल्लू अर्जुन का स्टेप। मुझे ना सबको कॉलेज में इम्प्रेस करना है। अरे विक्की, पुष्पा वाला स्टेप तो सीख जाओगे, पहले इडली डोसा खाओ। इडली दिमाग तेज करता है, तभी तो हम इसरो में रॉकेट उड़ाता है और तुम लोग लुंगी डांस करता है। हाँ, जब मैं अगली बार आऊंगा ना तो इस बार मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, और इस बार मजाक उड़ाने के लिए नहीं, फुल फैशन में पहन के आऊंगा। देखा ऑडियंस, साउथ का टेस्ट लग गया ना, बंदा थोड़ा थोड़ा नोट भी भूल जाता है, पर दिल से तो हम मेड इन इंडिया है। ओके, चाहे वैसे भंगड़ा करो या लुंगी डांस, चाहे बटर चिकन खाओ या इडली डोसा। जियोग्राफी में भले ही हमें नॉर्थ साउथ में बांटा है, पर दिल से तो हम मेड इन इंडिया हैं। और जब हम विदेश में इंडियन हैं तो अपने ही देश में नॉर्थ साउथ क्यों? स्वैग अलग है, ब्लड ग्रुप एक ही है, देसी। जय हिंद। That was an amazing presentation. If I say child, what does it remind you of? Maybe for some of you it's the cutting chai in a small glass at railway station. And for some, it might be kettle and those fine bone china cups served in the very sophisticated setting like that in the Victorian age. But in literature, chai is all about the conversations, the ideas, and sometimes even the stories that begin around it. So with that thought, I invite team number 5 to the stage to showcase their presentation. Give up a big round of applause for them. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ महिमा और ये है मेरी दोस्त तिरंदी जी। जरा सुबह की सर्दी में मसाला चाय का वाम कप बिल्कुल घर जैसा, राइट? तो आज चाय की पूरी कहानी सुनाते हैं, एशियन मेड से रेवोल्यूशन तक। तो मग उठाइए, रेडी? तो करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है लगभग 2077 BC में। चाइना के ग्रेट एम्परर थे जिनका नाम था शेन्नंग। वो तो बिल्कुल हेल्थ गुरु थे, हर हर्ब को जानते थे, लोग उन्हें डिवाइन फार्मर कहते थे। एक दिन वो जंगल के किनारे बैठकर पानी उबाल रहे थे, शायद कोई टॉनिक बना रहे थे इलनेस के लिए। आसपास वाइल्ड टी ट्रीज थे, तेज हवा चल रही थी जैसे कोई जादू कर रहा हो। सडनली कुछ पत्ते उड़ते हुए सीधा उबलते पानी में गिर गए।
पानी का रंग बदल गया सुनहरे गोल्डन ब्राउन कलर में। एनवायरनमेंट में हर तरफ खुशबू फैल गई। शेनडोंग हैरान, क्यूरियस। उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया जैसे जान में जान आ गई हो। उन्होंने बोला, ये तो देवताओं का अमृत है, ये पत्ते हर बीमारी भगाएंगे। बस यहीं से टी का जन्म हुआ, एक छोटे से इंसिडेंट से। वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम आपको चाय की पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे। चाय ने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, कब और कैसे। अब चाय पहुंची जापान और इसकी आगे की कहानी आपको मेरी दोस्त सुनाएगी। जी मैं बताती हूँ। 9th सेंचुरी में एक मंक के साथ चाय जापान पहुंची और वो मंक ने चाय के सीड चाइना से स्मगल किए। और पता है इस चाय के सीड की स्मगलिंग जापान में लाने के लिए की गई थी। अब आते हैं यूरोप। 17th सेंचुरी में एक पोर्टुगीज ट्रेडर्स अपने साथ एक कार्गो लाए जिसमें चाय यूरोप पहुंची और फ्रेंच कोर्ट से लेकर डच कोर्ट तक चाय स्प्रेड होती रही और ग्रो करती रही पूरे यूरोप में। बट आपको पता है ये लंदन में कब आई और कैसे आई? चलिए मैं बताती हूँ। 1640 में पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन इसे अपने साथ डाउरी में लाई और इसके हुए गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए और चाय का कप पहुंच गया रॉयल कोर्ट में आम आदमी तक। फिर 1840 में शुरू हुआ आफ्टरनून टी रिचुअल जिसमें थे चाय के साथ टाइनी सैंडविच एंड बिस्किट। चाय जो बन चुकी थी ब्रिटेन का एडिक्शन। वेट, इस कहानी में फिर से एक मोड़ आता है। ब्रिटेन का हो गया चाइना से झगड़ा, फिर एंट्री हुई हमारी इंडियन चाय। 1830 में डिस्कवर्ड हुई वाइल्ड टी, दार्जिलिंग बन गया इसका हब। क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारी इंडियन चाय में मिल्क ऐड करने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारी इंडियन चाय का टेस्ट हार्ड था, फिर शुरुआत हुई इसमें मिल्क ऐड करने की, जिससे बन गई हम इंडियंस की देसी चाय। क्या आप जानते हैं कि आज चाय की 55 बिलियन की इंडस्ट्री है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर रोज 5 बिलियन कप्स कंज्यूम किए जाते हैं एंड देयर आर अराउंड 4000 वैरायटीज ऑफ टी। अब आप बताइए आपकी फेवरेट चाय कौन सी है? मसाला चाय, मिंट चाय या फिर बबल टी? थैंक यू। That was also a wonderful performance. And with that, we come to the end of Literary Cultural Legacies, the segment of PPT presentation. Each performance today has added a unique color to this beautiful tapestry of literature and culture. Now, we request your patience for a short while as the judges compile the results. Stay with us as we return shortly with the much awaited announcements. Thank you.
Now we are waiting for a principal ma'am to come. As soon as she comes, we will start the felicitation and then prize distribution. Thank you. And now we move to a moment of honor. It is a privilege for us to facilitate Dr. Amrit Anand, a respected academic and former professor of our own college. I warmly invite Dr. Amrit Anand to kindly come forward and accept this small token of appreciation now. Principal ma'am to kindly join us, and all the senior teachers, Dr. Nirupma, all the senior teachers in the audience and the faculty members, please join. And then ma'am, we would like to hear your views upon today's program. I invite you to kindly come and sum up today's events. Thank you, ma'am. Respected Sukhinder ma'am,
ma'am, the whole of English department, all the other organizers who are at the PPT place, and all the guests and teams and dear friends and my students. It's so energizing and pleasing to be here since morning, now it's afternoon. Many days back, years back, I retired from here in 2009. It's 2026. So, my own college, my own teachers, and my students learned a lot from here. As regards English subject, I always used to call it aam ke aam gutliyon ke daam. You earn a lot, no doubt, but you are with great masters of the world, with great philosophers, teachers, writers, poets, novelists, and so many other people. As one of the girls said, that sitting at home, you can be in the company of so many writers, philosophers, etc. And as regards amalgam, the synthesis, the mosaic, it's really a very, very good attempt on your part, on the part of the teachers, those who first dreamt it, and it's written somewhere here, you will achieve only when you dream. So I was reading all these paintings, and Ramit ma'am told me that these were placed in their department room also. Really nice. And a great idea to have this amalgam. And I congratulate all the persons who are involved in it. And my best wishes for your club. Club, क्या नाम है? Oreto X. When I was in the college, I formed a club called Speakers Club. That time we didn't have such vocabulary or such terms. And you will be happy to know that Varinder ma'am was the active member of that club. And you can see where she has reached. Amalgam. It is an amalgam of happiness and sorrow, goodness and evil, pride and humility, and you can, the comparisons are endless. So I won't take much of your time. I am happy to be here. And as regards the it's a very tough job. So all the students have done very well. All stand first in my opinion. So don't go after the judgment. You have done your best, and doing is the best. Rather than sitting, rather than doing nothing, just taking part is the best. My best wishes to all of you. This is just a formality. This person stands first or second or third. All are winners, no doubt. Some are some are special winners, you can say. But you all have done very well. Hats off to the department, to the organizers, and my blessings. Okay. Thank you, ma'am, for those very encouraging words. We are indeed blessed to have you with us today. And ma'am, let us say synthesis, mosaic, the amalgam. So we have been using a lot of English since this morning. Now, let us have a blend of Punjabi in it. And for that,
I would love to invite our principal, Dr. Sukhwinder Kaur, because when she speaks in Punjabi, it's a treat. So I request ma'am, please come on stage. मेंटो से जब प्रिंसिपल आता है तो खड़े होना है। सत्कारयोग डॉक्टर गांधी बहुत ज़्यादा ऑफिस बिजी होने करके साडे मौजूद नहीं ने। बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर मिसिज आनंद जिन्हां दे नाल कुछ देर मैं भी काम कीता सी और बड़े अच्छिया चीज़ां उन्हां कोलों सीखण दा मौका भी मिलिया सी। तुहाडा साडे कॉलेज तुहाडा तुहाडे अपने कॉलेज विच आण ते बहुत बहुत स्वागत भी है। इंग्लिश डिपार्टमेंट ने बड़ा खूबसूरत एफर्ट किया है, तुसीं बहुत ज़्यादा वधाई दे मुबारक दे हकदार हो। अज असीं एक मेले नूं माणिया है। ये मेला है किताबां विचले पात्रां दा, लोक कथावां दे नायकां दा, लोक गीतां विचली पीड़ दा, बड़ियां बरीक ते सूखम संवेदनावां दा, मिठे एहसासां दा अते बड़े प्यारियां दियां यादां। साडे लिटरेचर चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना होवे, ये सब कुछ बड़ी वड्डी मात्रा च पाया जाता है और जो असीं वो पढ़ रहे हुंदे आ उन्हां दे नाल असीं जुड़ चुके हुंदे आ और बड़ी देर तक उन्हां नाल असीं जुड़े रहंदे हां। मैनूं इस गल दा उम्मीद है कि तुसीं इन्हां बरीक एहसासां दियां खूबसूरत पेशकारियां नूं माणिया होएगा, इन्हां दी शिद्दत नूं भी महसूस कीता होएगा ते तैयारी के दौरान इन्हां मिथिहासिक पात्रां नूं जीविया होएगा। बच्चों ने बड़ी शाबाश कि उन्होंने बहुत सोहनी स्टेज की है ते अपनिया मैडम्स का अपने टीचर्स का उन्होंने फिक्र ला दिता है। उन्होंने कहा असी हैगे हाँ मैम, वी विल डू इट। ते एक इवेंट बहुत खूबसूरत और बहुत कामयाब इवेंट है ते क्योंकि लिटरेचर की गल हो रही है तो मैं एक सूफी कपलेट तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगी। कल परसों ही मैं सुनिया है, कहता ईद कदां, कहता यार मिले जदां, यार मिले कदां, ये मैं मरे जदां, ये मैं मरे कदां, यार चाहे जदां। There could not have been a better culmination of the day one of the amalgam than with those very beautiful and thought-provoking words of our principal. Now is the time for the much awaited moment. So I'm going to announce the winners. For Immortals of Literature, the first prize, I also request the teams to come forward for a photograph on stage. And before announcing the prizes, I would like to tell all of you that we'll give you certificates later on. We'll provide them at your college because they're yet not ready. So the first prize goes to team number 5, Dr. Foster. So I request our principal and judges, Dr. Nirupama Seni and Madam Anna, to please come on stage to honor the students. So the first prize is for Dr. Foster's. Second is bracketed Sita and Draupadi and third is Macbeth. A special prize for Subhadra Kumari Chauhan.
participants of Mother's Day please come on the stage? Congratulations to the winners and to all others who gathered the courage to come on stage. And for literary cultural legacies, the first prize goes to team number 5 representing India, and the second prize goes to performance number 1, that is Punjab. Diversity of India, first prize, and Punjab is second prize. Please come forward. So the first prize is for the girls who talked about South India and North India. Please come forward. First prize is for you. And second is for team number 2, Punjab. We leave today with the promise that tomorrow is going to be more fun. And before leaving, I would like to thank all our dear students who took up the responsibility and definitely made us quite comfortable and free. To all the volunteers who stood there, to the anchors, to the decoration team, believe me, you have done a commendable job. We are proud of you. A huge clap for all of you.
A special thanks to Madam Hina Grover from the Department of Computer Science for live streaming this whole event, and to Manpreet Kaur from the Department of Mass Comm for helping us out with the recordings. Thank you. We'll meet tomorrow, so we expect you to come and grab your seats at the earliest. 10:30 we'll again meet. Thank you.